हेलो दोस्तों। तो वेलकम टू योर ब्यूटीफुल सा चैनल मैथ्स प्रकाश बाय नूर। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि आज हमने टॉपिक लिया है ट्रिगोनोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। किस लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है और किसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है? बेसिकली जो लोग अभी सोच रहे हैं कि बोर्ड्स के बाद हमें साइंस बैकग्राउंड में जाना है, हमें मैथ्स पढ़ना है, या हमें मतलब साइंस के फील्ड में या इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना है, तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आपका बेस कमजोर रहा तो ट्रिग्नोमेट्री आप आगे नहीं बना पाएंगे। सो बेसिकली मैं अब जो हूँ इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज को हल्का कुछ डिस्कशन करूंगा और स्टार्टअप करूंगा। सो ट्रिग्नोमेट्री अगर नाम सही से देखा जाए तो यहाँ पे ट्रीगो मीन्स बेसिकली होता है ट्राइंगल, या ट्राई हम लोग बोलते हैं ना, ट्राई मीन्स व्हाट, थ्री साइडेड फिगर। सो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल से जैसे हम लोग सुनते हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सा लॉ यूज करते हैं हम लोग, ये याद है आप लोग को? सो वी आर गोइंग टू यूज पाइथागोरस थ्योरम ओवर हियर। व्हाट इज अ पाइथागोरस थ्योरम? बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम हमें ये लॉ देता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू base square plus perpendicular square. So what is hypotenuse now? So the longest side is known as hypotenuse, which is always opposite to the right angle. So see, this one is our right angle, means what? 90 degree. So now we are naming it triangle A, B and C. So whenever we see a triangle containing a 90 degree, we will call it as a right angle triangle. So angle कौन से इसमें फॉर्म हुआ है? B में. So triangle ABC is equals to 90 degree. Okay. So opposite of right angle, the longest side or the longest distance will always be our hypotenuse. So now what is base? इस फिगर के हिसाब से base, of course base means what? नीचे वाला हिस्सा. So base is my BC. BC is equals to base over here. Correct? And now what is perpendicular? Perpendicular is the straight line, or this one, AB. So this one is our perpendicular. So AB is equals to perpendicular. Okay दोस्तों. So now what is AC? Of course we know AC is equals to hypotenuse. Correct? So memorize this formula. This is going to be useful in the whole chapter of trigonometry. So now we know we have to discuss about what? Right angle triangle. Okay. So trigonometry is a type of ratio which we are going to discuss about the two sides. We are going to take two sides and their ratios only. So like when we are talking about AB by BC, when we are talking about AC by BC, when we are talking about AB by AC, like this type of figures, like this type of ratio we are going to take. So trigonometry अगर कोई पढ़ चुका है तो शुरुआत में हम लोग sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा and cot theta. So basically what are they? They are nothing than a ratio. They are all only a ratio. So sin theta, firstly I should rub this on. So basically आप समझ गए इस चैप्टर में हम लोग किसके ऊपर पढ़ने वाले हैं? एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में और उसके रेशियोज के बारे में. करेक्ट. सो एक राइट एंगल ट्राइंगल हम बना लेते हैं. करेक्ट. ओके. सो वी आर नेमिंग इट एज ए, बी एंड सी, where AB is my perpendicular, BC is my base and AC is my what? Hypotenuse. Good. So अब हम लोग कुछ रेशियोज लिखने वाले हैं, लाइक साइन, cos, tan, cosec, sec
and cot. These are the ratios. हम लोग इस सब को हम लोग जो है इस ratios के टर्म में डिफाइन करेंगे. अच्छा, मैंने अभी बताया था थीटा वर्ड का यूज किया था. सो व्हाट इज थीटा? This symbol is known as theta. We sometimes often use eta also, and there are other symbols like alpha, beta, and gamma. Like in different type of questions, we may seen this type of angles also, this kinds of constant terms also. So basically, these are all the constant terms only. Okay, nothing to be worried about. Okay, so theta is what? Theta is the angle. Angle between what? Between two sides. Like what? Which two sides we are discussing about? Like in this figure, this is the fixed or constant term, that is my 90 degree. It cannot be changed. Correct, students? So theta may be this and maybe this also. So if we are mentioning it with theta, so the other angle will be what? Either 90 minus theta or what? Phi? Not phi. It's eta, whatever you call, alpha, beta. Okay, so basically we all know 90 degree means a sum of angles of a triangle is what? Sum of angles of a triangle is equals to what? 90 degree plus theta plus theta, which is equals to what? 180 degree. We all know that sum of angles of a triangle is always 180 degree. It cannot be more, it cannot be less. The sum of angles of a triangle is always 180 degree. Okay, students? So now we are discussing about sine. So what is sine? Or which two sides are known as sine? Or which two ratios are known as sines? Or which two sides of which किन दो रेशियोज को हम लोग साइन बोलेंगे, किन दो साइड का रेशियोज को हम लोग साइन बोलेंगे. सो साइन बेसिकली होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. कॉस इज माय बेस बाय हाइपोटेन्यूज. ओके, सो आई थिंक आई शुड राइट अ लिटिल बिट मोर. अभी मैं भी आपको सिर्फ 3 दिखाता हूं. फर्स्ट cos, tan, perpendicular by base. अच्छा, so basically sine is the ratio between perpendicular and the hypotenuse. Cos is the ratio between base and the hypotenuse, and tan is the ratio between perpendicular and base. So अब ये चीज हम याद कैसे रखें भाई? ये चीज हम कैसे करके इतना जल्दी हम याद करें? सो इसके लिए एक बना है ट्रिक. अलग अलग टीचर्स अलग अलग ट्रिक को आजमाते हैं. सो फॉर माय ट्रिक, अच्छा अभी मैंने बता के गया कि हम लोग 6 रेशियोज के बारे में पढ़ने वाले. करेक्ट, बट यहाँ तो मैंने 3 लिखा है, बाकी का 3 वो अभी थोड़ा देर में बताता हूँ. सो ट्रिक क्या है? एक लाइन है, इसको याद कर सकते हैं आप. सम people have curly black hair, black or brown, whatever, black hair, turn partly brown. So this is what? This is nothing, this is a sentence only. So sum S denotes what? Sine over here. People, P stands for perpendicular, H stands for hypotenuse. Correct? So now sine, S stands for sine, P stands for perpendicular, H stands for hypotenuse. So sin थीटा का फॉर्मूला हमारा निकल गया. इससे आगे देखते हैं. Here curly, cos. What is cos? Curly black means base, and H stands for again hypotenuse. Correct? Sin is equals to P by H, cos is equals to B by H. ये दोनों तो निकल गया हमारा इस फॉर्मूला से, मतलब इस ट्रिक से. Now see T stands for
tan is equals to P by P, perpendicular by base। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक लाइन से मैंने तीनों का आपको रेशियो इजीली याद करा दिया। सो सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक और ब्राउन हेयर, टर्न पार्टली ब्लैक और ब्राउन। सो दिस आर द थ्री मेन रेशियोज। सो अब साइन कॉस टैन पढ़ लिया, अब क्या बचा है? कॉसेक, सेक एंड व्हाट? कॉट। करेक्ट। सो चलिए अब उनका भी देख लेते हैं हम लोग आज। ट्रिक को रब कर दिया मैंने। देखिए यहां साइन है, करेक्ट। साइन के बाद हम लोग टैन के बाद लिखते हैं कॉसेक। कॉस है, कॉस का उल्टा होता है बेसिकली सेक। टैन का उल्टा होता है, ये रेसिप्रोकल होता है कॉट। ये चीज आप अगर पढ़े हैं तो आपको पता होगा। सो साइन का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मीन्स व्हाट? इफ यू आर राइटिंग 1/2, रेसिप्रोकल विल बी 2/1, करेक्ट। सो बेसिकली यहां पे देखो कॉसेक का हम क्या बताए? साइन। सो साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? h/p। ये इसको अच्छा इस तरीका से लिखने से अच्छा है इसको पहले लिखते हैं 1/sin, which is equals to now h/p, correct? Now what is sec? Sec is nothing but reciprocal of cos. So what is cos? b/h. So what is sec? h/b, correct? So what is cot now? Cot is nothing but reciprocal of tan. So what is tan? Perpendicular by base. Now cot is base by perpendicular. Easily you can now remember. So basically इस वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया है क्या? हम लोगों ने चर्चा किया है कि क्या क्या रेशियोज होता है। लाइक साइन का रेशियो, किन दो साइड्स का रेशियो को हम लोग साइन बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जब हम लोग डिस्कस करेंगे देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट? साइन थीटा, करेक्ट। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉस, cos is nothing but base by hypotenuse. Whenever we are going to discuss about base and hypotenuse, we will mention cos theta or its reciprocal sec theta, correct? When we are going to discuss about the perpendicular as well as the base only, not the hypotenuse. So then we are going to discuss about what? This tan and the cot. So पढ़ते रहें, all the very best.